Very good morning to all of you. Myself, Professor Ravindra Gupta from Sonupanta Dandekar Junior College, Palghar. Today we are starting with Agriculture, Science and Technology 12. In that, chapter number 10, Agrotourism. In last lecture, we have completed a part 1. In that, we have completed with a 10.1.2. In today's lecture, we are starting with the 10.1 concept and feature in that 10.1. Okay, today we are starting with the 10.1.3, that is features of agro. So now, what are the features of agrotourism? What is the application point of that? So the agrotourism activity take place in an accessible location and community participation in a prerequisite. So ultimately हमको ऐसा लोकेशन फाइंड आउट करना है फॉर एग्रो टूरिज्म जहाँ पर लोग क्या होंगे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो. सो अल्टीमेटली वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा असेसिबल रहा, मीन्स अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फैसिलिटी रहा. सो मोर पीपल विल अट्रैक्ट दैट एग्रो टूरिज्म एंड दे विल बी गेट बेनिफिटेड. और फिर उन लोगों को कम से कम जो भी है मनी ये करके ट्रांसपोर्टेशन है और फिर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन हमारे एग्रो टूरिज्म को होता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ विलेज इज प्रमोटेड बाय लोकली डेवलप्ड accommodation and a food path. More focus should be given on cleanliness and hygiene in accommodation service. Okay, normally whatever agro tourism we are select, हम लोग जो भी agro tourism select करेंगे वहां पर हमको विलेज साइड ज्यादा से ज्यादा फोकस करना और विलेज से वहाँ के जो भी लोकल कम्युनिटी है या तो लोकल जो फूड वैरायटी है उसको हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है. एट द सेम टाइम हमको इसके अंदर फूड फैसिलिटी और उसके अंदर क्लीनलीनेस और हाइजीनिक कंडीशन ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज भी प्रोवाइड करना है. तो अल्टीमेटली एग्रो टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा फीचर्स है ये पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, a tourist shopping center of a local and organic product can be opened. You can see in this picture. Okay, you can see in this picture जो भी हैंड क्राफ्ट जो भी वैरायटी है मीन्स द लोकल जो पीपल फॉर्म करते हैं ऐसे वैरायटी को वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलना चाहिए और ये मिलना चाहिए वेटेज मिलना चाहिए. सो अल्टीमेटली वो जो सेलिंग भी होगा और जो कि लोकल वैरायटी है सो अल्टीमेटली जो लोकल पीपल है उनको भी बेनिफिट. Now, the focus should be on a something to see a something to do and something to buy. Means the people, जो भी people यहाँ पर visit करेंगे एग्रो टूरिज्म सेक्टर में तो वहाँ पर एक तो ऑर्गेनिक जो भी फूड है मीन्स वेजिटेबल्स वगैरह वो भी मिलेगा प्लस लोकल जो भी थिंग है उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा. ऐसा हमको वहाँ पे सोचना चाहिए और बाय करना चाहिए. सो दैट इज द फीचर्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फिफ्थ वन पॉइंट. Tour to production center like a fruits garden, goat and poultry and a dairy farm, etc. Also visit to a local places like a gram panchayat, school, village, river and old religious places, etc. should be. मीन्स एग्रो टूरिज्म के साथ में हमको वहाँ पर नियर बाय में वहाँ पर फ्रूट का गार्डन ऐसा भी हमको देखना चाहिए. गोट का फार्मिंग है, पोल्ट्री का फार्मिंग है, डेयरी फार्म है. So ultimately that people will attract on that same place. Means उनको agro tourism related agriculture से भी facility मिलेगा और ये सब भी उनको देखने मिल जाएगा. So that will be the main focus of that point. You can see this picture. I think last time का अगर सबको पता होगा so 11th में हमने जो visit किया था not in 11 इसके 1 year पहले हमने जो visit किया था वहाँ पर हम लोग ने agro tourism center भी था और प्लस वहाँ पर हमने पोल्ट्री फार्म वगैरह जो फार्म जो होता है दैन काउस बफेलो का जो फार्म वगैरह है ये सबको भी हमने विजिट किया था. सो अल्टीमेटली वहाँ पर स्टूडेंट्स को वो भी देखने मिल जाया था एग्रो टूरिज्म के साथ. नाउ फैमिली एंड विलेज गेम लाइक गिल्ली डंडा, दैन कबड्डी, रेसलिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, पेडल प्लैंक etc. should be arranged with the evening entertainment like a campfire, local and a folk dance song should be also be provided. Some women arrange a religious and religious organization. So ultimately यहाँ पर एग्रो टूरिज्म के साथ में हमको वहाँ पर जो कुछ भी
गेम्स है अलग अलग टाइप के, वो भी अरेंज करना। यू कैन सी दिस पिक्चर, यहाँ पर एक छोटा सा विलेज के अंदर लोगों ने जो भी है वहां पर कैंप साइड में फायर वगैरह का भी रखा। सो अल्टीमेटली द पीपल विल अट्रैक्ट टू दैट प्लेसेस जो कि नाइट का एरिया और वहां पर फायर वगैरह हो रहा है। सो डांसिंग वगैरह जैसे कि वहां पर कुछ अलग अलग टाइप के होंगे। सो अल्टीमेटली वहां पे लोकल जो पीपल रहते हैं बोल के वहां पर डांसिंग वगैरह, फोल्क वगैरह जो भी रिलीजियस होता है ऐसे चीजों को हम लोग वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली दे विल आल्सो बेनिफिटेड एंड द पर्सन का एंटरटेनमेंट भी बहुत ही अच्छा होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी फीचर्स ऑन अ टूरिज्म सेंटर। कुछ हमको सेफ्टी फीचर्स भी देखने पड़ेंगे। सेफ्टी फ्रॉम स्नेक, एग्रो टूरिज्म सेंटर है, फार्म साइट है, तो वहां पर स्नेक वगैरह हो सकता है। सो स्नेक से सेफ्टी प्रोवाइड करना। सेफ्टी फ्रॉम वाइल्ड एज वेल एज पेट एनिमल, ओके वाइल्ड एनिमल्स भी वहां हो सकते हैं इफ दिस इज एरिया इज ओपन। सो उससे भी हमको सेफ्टी प्रोवाइड करना है पर्सन को, एज वेल एज पेट एनिमल मींस काउस है, बफेलो है, तो इनसे भी हमको सेफ्टी प्रोवाइड whatever people are coming and tourist are coming. Now the next part, safety from social environment around the center। वो जो भी सेंटर्स है वहां पर जो भी सोशल एनवायरमेंट है, सो उससे रिलेटेड सेफ्टी हमको प्रोवाइड करना। सेफ्टी ऑफ अ टूरिस्ट एंड देयर वैल्यूएबल बिलोंग मींस फ्रॉम द पीपल, मोस्ट ऑफ योर अर्बन पीपल्स अर्बन जगह से आ रहा है, सो अल्टीमेटली उनके वैल्यूएबल लाइक नेकलेस वगैरह सो भी हो सकते हैं। सो इसको भी सेफ्टी प्रोवाइड करना हमारा थोड़ा सा ये हो जाएगा। Done. Safety during a enjoying a different activity on a farm like swimming. You can see in this picture, यहाँ पर स्विमिंग वगैरह एक्टिविटी हो रहा है, तो वहां पर देखो सेफ्टी के लिए वहां पर कुछ जैकेट्स वगैरह प्रोवाइड किया है, गेम्स वगैरह हो रहा है। सो अल्टीमेटली जो स्माइल चाइल्ड है वो उस रिवर्स वगैरह जो भी साइड है वहां पर फिर उधर जाके फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकता है। सो वो एक सेफ्टी हमको प्रोवाइड करना। सेफ्टी ड्यूरिंग अ मेडिकल इमरजेंसी, ओके नियर बाय मेडिकल इमरजेंसी लग रहा है टाइम पे, तो वो भी उनको प्रोवाइड करना। Now the next part, that is 10.2, that is advantage of a agro tourism sector. What is the advantage? इसका advantage क्या है? Application point. Now agro tourism has a potential to change the economic base of a tradition agriculture. ओके ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में जो होता है उसके अंदर हमने कुछ एडवांस फीचर जैसे गेम्स वगैरह सब ऐड कर दिए, तो यहाँ पर इकोनॉमिकली ये थोड़ा सा और भी बढ़ जाएगा। द एडवांटेज ऑफ एग्रो टूरिज्म डेवलपमेंट आर manifold and it would bring a direct and indirect benefit to the farmers and rural. सो अल्टीमेटली ये जो सेंटर्स है एग्रो टूरिज्म ये फार्म साइट में है, सो अल्टीमेटली वहां के जो पीपल्स है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। सो अल्टीमेटली दे पीपल्स आर गेटिंग, सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर बेनिफिटेड, सो जिसका फार्म है तो फार्मर्स है, देन जो रूरल पीपल होते हैं, लोकल्स पीपल होते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, सम बेनिफिट आर एज फॉलो, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट लोग देखते हैं। द फर्स्ट, agriculture tourists allow a people tourists to stay close to the nature and experience a different function or operation that are carried out on the farm, and they can monitor work and all those things. तो अल्टीमेटली यहाँ फार्म साइड है, वहीं पर हमने उनको प्लेस भी प्रोवाइड किया। सो अल्टीमेटली फार्म से रिलेटेड जो वहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रहा है जैसे कि कटिंग वगैरह हो रहा है, ओके देन वहाँ पर कुछ कटिंग वगैरह जो भी है ग्रास वगैरह या तो फिर कुछ फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो रहा है। सो अल्टीमेटली दैट पीपल कैन फंक्शन जो भी अलग अलग एक्टिविटी ऑपरेशन हो रहा है वो उनको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा नियर बाय। सो ये एक एक्टिविटी में ऐड होता है। Now the second advantage and application, that is it brings the major and primary sector which is agriculture closer to a major service sector. Okay, यहाँ पर क्या बोला है? It brings the major and primary sector which agriculture. इसका major जो main part है that is the agriculture close to a major service sector, और इससे related जो services है वो हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें provide करें। Cultural transformation between the rural and urban people, including a social and moral value. यहाँ पर क्या होगा? When the peoples are visiting from a urban area, so कुछ activity local people के religious thought या तो religious songs या तो dance वगैरह हो सकता है। So the people can, जो urban people है अगर वो देख रहे हैं तो उनके जो भी और ये ट्रांसफॉर्मेशन कल्चर वगैरह है वो अर्बन पीपल में ट्रांसफॉर्म होगा। अर्बन पीपल के अंदर कुछ अलग एक्टिविटी है तो ये पीपल में और ट्रांसफॉर्म
कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द रूरल एंड अर्बन, दोनों में भी क्या हो रहा है, वाइस वर्सा, जो भी है मोरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बेनिफिट है, एडवांटेज। Agrotourism, which involves the villages and agriculture, has a capacity to satisfy and curiosity of the urban segment by providing a scope and re-diversing the rural life, which is rich in diverse. So normally ये rural जो भी life है उसको हम लोग वहाँ पे शो करें, और rural life means urban से अगर हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर diversity बहुत है, in term of plant, in term of animal, in term of anything, कुछ भी things अगर हमने ले लिए तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी वगैरह है वो उनको यहाँ पे स्टडी करने अलग अलग टाइप। Now the fifth one, agriculture sector has the capacity to absorb an expansion in tourism. Most of देखो जैसे कि अगर मैंने नियर बाय अगर कोई टूरिज्म सेंटर ले लिया, सो दैट इज मुंबई में जैसे कि है दैट इज एक्सेल वर्ल्ड, सो अल्टीमेटली उसका एक छोटा सा एरिया है, उतने एरिया में वो कुछ ही लोगों को वहां पे ले सकता है, उससे ज्यादा जो भी है वहाँ एक्सपांशन नहीं। बट एग्रीकल्चर सेक्टर इज टू मच बिगर, ये जो एरिया है ये बहुत बिगर हो सकता है, तो यहाँ पर कितना भी लोड आए, कितने भी पीपल्स अगर ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर दे कैन एब्सॉर्ब द एक्सपांशन इन टूरिज्म। तो ये टूरिज्म सेक्टर में आने वाले जितने भी पर्सन है टूरिस्ट है उनको ये एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज द एग्रीकल्चर। सो अल्टीमेटली इस पे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा बिकॉज दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पॉइंट, एग्रोटूरिज्म create employment opportunity to the farmers, including a farm and a family members and a youth. So ultimately rural area में जिनका farm है ऐसे farmers को भी ये employment provide करा, and their family, उनके family के जो person है जो उसके अंदर involve है इनको भी ये क्या provide करेगा, opportunity provide करेगा in favor of employment। और youth जो भी है न्यू है person उनको भी ये employment। Now, seventh point, it provide additional income source for the farmer to protect the against the income fluctuation. फार्मिंग में क्या होता है, हमेशा उनको फार्मिंग में उतना मनी नहीं मिलता, तो साइड बाय साइड अगर ये बिजनेस है तो फार्मर्स को एक एडिशनल इनकम जो कि फ्लक्चुएशन उनके जो भी उनको फार्मिंग में जितना मिल रहा है उससे अलग ये इनकम प्रोवाइड हो जाएगा, ये थोड़ा सा एडिशनल इनकम के तौर पर उनको यूज होता है। The urban people can understand the rural life and know the different agricultural activity if they are visiting. Urban people अगर visit करें, so ultimately उनको rural life कैसे होता है, कैसे वर्क होता है, ये थोड़ा सा उनको देखने मिल जाएगा। At the same time, agriculture से related different activity है, वो भी शो होता है। So that is all about that advantage. Now the next point is educational value. Okay, this now the next point is educational value. Agriculture spread a knowledge about agriculture science among the urban people. Agriculture से related जितने भी knowledge है like हार्वेस्टिंग का प्रोसेस हो सकता है, पेड़ का प्रिपरेशन हो सकता है, मीन्स अलग अलग टाइप के जो एक्टिविटी है ये सब का जो भी है और ये नॉलेज कहाँ पर स्प्रेड होगा, सो अर्बन पीपल स्प्रेड होने के लिए हेल्प होगा। Now, strong family-oriented recreation activity through a rural game, festival, food and races. Example, village gram Rajasthan. You can see in this picture, okay? राजस्थान वगैरह जो भी एरिया है तो वहां पर उनसे रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटी। नाउ कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इज राजस्थान पीपल जो भी है तो वहां पर रूरल जो भी एरिया है वो कैसे होता है, उनको वहां रहने को मिलेगा, देन अल्टीमेटली उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी हार्वेस्टिंग टाइम में आपने देखा होगा कि हार्वेस्टिंग टाइम में जो भी है अलग अलग रीजन है, महाराष्ट्र में अलग है, राजस्थान में अलग है, सो अलग अलग जो भी है एक्टिविटी होता है, डांसिंग होता है, डांस एक्टिविटी होता है, सो दैट एक्टिविटी जो भी है फेस्टिवल जो भी है वो भी उनको देखने मिलेगा, प्लस रूरल पीपल के ड्रेसिंग वगैरह जो भी है ये सब भी उनको देखने मिलेगा, गेम्स वगैरह देखने। Agrotourism help to reduce the burden of other traditional tourism. जो अदर जो ट्रेडिशनल टूरिस्ट पहले से टूरिज्म चल रहा है उसके ऊपर एडिशनल बर्डन ना है, तो ये जो भी है ये एक थोड़ा सा उसका बर्डन कम कर सकता है। So that is all about that advantage of agrotourism. Now we will starting with the 10.3, that is type of agrotourism.
ओके, कौन से अलग अलग टाइप के एग्रो टूरिज्म, मीन्स एग्रो टूरिज्म आवर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि वहाँ मार्केट आ गया तो वो एक टाइप हो गया, एक एजुकेशनल एग्रो टूरिज्म हो सकता है, एक प्लेइंग वगैरह जो भी है, ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रो. Now, agrotourism can be classified into a following fundamental. The first, direct market of agrotourism. This is related with the market. Okay, so ultimately agriculture जो food है वो market में sale होता है. Now, one of the most popular example of this farm is a roadside produce station. The farmer and owner sell a wide range of goods such as farm produce, organic and processed product, or a pack or canned food item directly to a customer either at a fair, an exhibition, and a market on a farm itself. So ultimately you can see that यहाँ पर अगर हम लोग पुणे के अंदर ये आमंत्रण कृषि पर्यटन केंद्र है. सो यहाँ पर क्या होता है कि एग्जीबिशन वगैरह अगर लगा दिया, नहीं तो यहाँ पर नियर बाय फार्मर के साइड में वहाँ पर नियर बाय कोई मार्केट वगैरह है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो अल्टीमेटली फार्मर्स की जो भी प्रोडक्ट है वो वहीं पर डायरेक्टली सेल हो जाएगा हैंड टू हैंड, एंड दे विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट. तो इसके अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, प्रोसेस प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट वो लोग सेल करते हैं. Now the next part, experience and educational agro. When they are visiting, so यहाँ पर you can see in this picture कि यहाँ पर जो अलग अलग एक्टिविटी हो रहा है एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड, सो वो वहाँ पे उनको सीखने को. So this form of agro tourism include a hand picking of a fruit from orchard, bed, and breakfast facility, farm and tour packages of providing farm working to urban people or a tourist. Once a visitor or a tourist acquaint the farm working closely, they also feel the value of purchasing organic farm food. नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो फिर हम लोग बार्गेनिंग करते हैं. ऑर्गेनिक फूड तो देख लिया, बट नॉर्मल फूड से ऑर्गेनिक फूड थोड़ा सा, तो हम लोग वहाँ बार्गेनिंग करते हैं. बट व्हेन द अर्बन पीपल अगर यहाँ विजिट कर रहे हैं और वो लोग वहाँ पे देखेंगे कि उस फूड को प्रोसेस करने उस फार्मर को कितना टाइम लग रहा है, अगर वो भी उतना करके देखेंगे, सो अल्टीमेटली नेक्स्ट टाइम वो लोग ऑर्गेनिक फूड के लिए ज्यादा से ज्यादा ये कहो कि ओके परचेसिंग के लिए और प्लस ज्यादा से ज्यादा वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं. यू कैन सी इन दिस, यहाँ पर जो भी है हार्वेस्टिंग टाइम में हार्वेस्टिंग करने मिल सकता है जो भी टूरिस्ट वहाँ जा रहा है. नाउ यू कैन सी दैट इन दैट पिक्चर जो टूरिस्ट है डायरेक्टली वहाँ पर क्या करें, जो कि राइस का फील्ड है वहाँ पर राइस वगैरह ग्रोथ का जो भी पार्ट है उसको ये कर रहे हैं. देन दे कैन सर्फिंग एजुकेशनल जो भी पार्ट है वो भी यहाँ पर विजिट कर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, event and recreation agrotourism. Now, what's the meaning of that? This form is still regarded as an agrotourism. It offers generally utilizing the farm land for various other marketable products like hurda or hurda party. You can see in this picture, this one is the hurda party. What is the meaning of that? So जो भी farm से related activity है वो सब इसके लिए food के अंदर add किया, so that is called it as a hurda party करके ना. हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक Irjeek, you can say that different type. Okay, और अगर हम लोग पूरे इंडिया में ही लेंगे तो इंडिया के अंदर अलग अलग रीजन में हार्वेस्टिंग के टाइम जब लोग फूड कट करते हैं तो हार्वेस्टिंग के टाइम में अलग अलग टाइप के डांसिंग वगैरह होते हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर, ये जो भी पिक्चर है राजस्थान सॉरी पंजाब एरिया का जो भी है वहाँ का दिया है कि यहाँ पर हार्वेस्टिंग टाइम में वो लोग डांसिंग वगैरह करें. तो ऐसे फैसिलिटी हम लोग जो भी है उन पर्सन को जो भी टूरिस्ट है उनको प्रोवाइड कर. सो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल लाइक Irjeek, वेडिंग दैट हेल्ड ऑन अ फार्म. आपको पता ही होगा अभी ज्यादातर जो भी वेडिंग्स होते हैं तो वो अभी ट्रेडिशनली हमारे अर्बन पीपल जो भी हॉल में ना लेके जो भी फार्म वगैरह एरिया होता है वहां पर ज्यादातर करते हैं. सो दैट इज अ वेडिंग हेल्ड ऑन अ फार्म. देन मेला जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पीपल अट्रैक्ट होंगे और दे कैन परचेज. देन जेगरी प्रिपरेशन, ओके, जो भी गुड़ वगैरह होता है उसका प्रिपरेशन वगैरह जो होता है वो देख सकते हैं. बी कीपिंग कैसे होता है, ओके, लास्ट टू लास्ट ईयर वी हैव विजिटेड, ओके, हम लोग एक जगह विजिट किए थे, वहां पर हमने देखा था कि बी कीपिंग का कैसे होता है वो प्रोडक्शन हमने देखा था. सेरीकल्चर, सिल्क का साड़ी वगैरह प्रिपरेशन वहां पे विजिट कर सकते हो. एक्सेट different recreation activities such as archery, then summer camp, horse riding,
car riding, etc. are also made available for attracting a guest for buying organic items that can produce on a farm. Once the strong connection has been established between the farm and the consumer, so it can easily build a long term relationship. Means अगर वो person tourist जो भी है, अगर वो agro tourism sector पर visit कर रहा है and they get benefited, अगर उनको अच्छा मिल रहा है वहाँ पर games है, वहाँ food अच्छी मिल रहा है और अच्छे से अच्छा lifestyle अगर उनको अच्छे से मिल गया, so ultimately वो ज़्यादा से ज़्यादा उस place पर आने के लिए सोचेंगे, so ultimately उनमें एक अच्छा relationship maintain हो जाएगा for the different type of. Now the next part, that is 10.4, that is facility for an agrotourism. Which type of facility? Whichever provided by an agrotourism center. The first one is the food. Eating is a compulsory activity of human. Okay, energy का production होना है हमारे body में, तो हमको food तो eat करना ही पड़ेगा. And a farming is the activity oriented to food production. जो farming activity है वो पूरा का पूरा food production से related. Hence, there are a two dimension in a field of food agrotourism. Then, restoration, breakfast, okay, यहाँ पर हम लोग अच्छा से अच्छा ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. होममेड मील, घर में अच्छे से अच्छा फॉर्म किया हुआ होममेड मील प्रोवाइड करते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके, जो भी है फार्म से मिला हुआ जितना भी एक्टिविटी से जो भी फूड वगैरह है होममेड, वो हम लोग वहाँ पर अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कर सकते हैं. Trade, creating a trade partnership with the tourist sector for a farmer, artisan and agro process. Okay, so ultimately जो टूरिस्ट है वो डायरेक्टली वो जो भी फूड वगैरह है ट्रेड वगैरह है वो उसको परचेस वगैरह कर सकते हैं, ऐसा भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं. डी, दैट इज कर्लिंग, culinary workshop, food festival, then buying a packages local product, farmer markets, tour to a food factory. You can see in this picture, यहाँ पर फूड का जो फैक्ट्री है जहाँ पर प्रोसेसिंग वगैरह हो रहा है वहाँ पर हम लोग विजिट कर सकते हैं. अगर लास्ट टाइम का याद आ रहा होगा आपको, तो हमने नासिक में विजिट किया था और वो वाले पार्ट में हमने फूड का प्रोसेसिंग अच्छे से पूरा का पूरा देखा था. दैट इज जाम का प्रिपरेशन वहाँ पर देखा था. वहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोसेसिंग के पार्ट थे वो हमने देखा. दैट डायरेक्ट ऑन अ फार्म सेल, ओके, फार्म सेल जो भी है वो हम लोग देख सकते हैं. एग्रीकल्चर रोड साइड स्टैंड सेल, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्राफ्ट एंड टिप्स वगैरह जो भी है वो पार्ट इस प्रोवाइड. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ई, दैट इज आउटडोर रिक्रिएशन. ओके, उसको छोड़ के हम लोग और क्या एक्टिविटी कर सकते हैं. हॉर्स राइडिंग ऐड हो सकता है. वाइल्ड लाइफ व्यूइंग, ओके, वाइल्ड लाइफ, वहां पर अगर वाइल्ड लाइफ फीचर है तो वहां पर जो भी एनिमल्स है अलग अलग टाइप के, दैन प्लांटेशन है, दैन प्लांटेशन के साथ में वहां पर अलग अलग टाइप के बर्ड्स वगैरह हैं, तो वो भी हम लोग वाइल्ड लाइफ व्यूइंग के अंदर. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ओके, यू कैन सी दैट अर्बन पीपल जो होता है फोटोग्राफी में ज्यादा से ज्यादा ये होता है, तो हम लोग वहां पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रोवाइड कर सकते हैं. फिशिंग एक्टिविटी, इफ यू हैविंग अ फार्म और वहां पर एक बहुत बड़ा अगर अच्छे से हमने ये किया, सो अल्टीमेटली वहां पर फिशिंग का एक्टिविटी, सो दे पीपल कैन फिशिंग वहां पर कर सकते हैं, ऐसा कुछ एक्टिविटी. ओके, दैन पिकनिक एक्टिविटी, दैन क्रॉस काउंट्री हीलिंग, दैन द एंटरटेनमेंट के अंदर एग्रीकल्चर फेयर्स, लोकल फेस्टिवल जो हमने ऑलरेडी देखा था, स्पेशल इवेंट भी कुछ कर सकते हैं, दैन अ पेटिंग जू एंड ड्रॉग ट्रेनिंग, ये सब एक्टिविटी लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. So this is all about that 10.4 facility of for agro tourism which is provided by agro. So this is all about that this chapter. Okay, so this chapter is clear. So if you have any doubts, so you can contact my WhatsApp number, that is 9273888700.